Good morning, respected parents and dear students. Welcome to your computer class. Today, I am going to discuss rest portion of Chapter 5, which is looping statement in QBASIC. In the previous class, we have learned about for next loop and also discuss practice zone. Here, I am going to discuss some examples of for next loop. After that, completing all rest portions of this chapter. Example 1. To add natural numbers from 1 to 20. First one example, to add natural numbers from 1 to 20. First one line CLS. CLS mean to say clear the screen. At the beginning, sum is equal to 0. For I is equal to 1 to 20, sum is equal to sum plus I. Next I print sum of numbers from 1 to 20 is equal to sum. सबसे पहले प्रोग्राम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग. इन द स्टार्टिंग शुरू में सम 0 होगा. आई की वैल्यू 1 से 20 तक इंक्रीज हो रही है. सम जो होगा वो सम प्लस आई होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होगी सपोज, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा फर्स्ट वाले स्टेप में. फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी आई 1 से 2 हो जाएगा. तो 2 होने के बाद जो सम है वो 1 हो चुका है. 1 प्लस 2 3 हो जाएगा. इस तरह से वो सारे नंबर्स को ऐड करता जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा. 1 से आई की वैल्यू 2 होगी, 2 से 3 होगी, 3 से 4 होगी, और वो सम वाले में ऐड होता चला जाएगा. जहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखा हुआ है, यहाँ पे वो प्रोसेस होगा कि सम जो है वो चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू आई वैल्यू. फाइनली प्रिंट करेगा वो सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, which is 210, as you can see in the output screen. Next one example is to add all even numbers from 1 to 20. अब यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ इवन नंबर को ऐड करना है, और वो भी 1 से 20 के मिड में जितने भी आते हैं. तो इसके लिए भी आप पहले CLS लिखिएगा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए. फिर सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज इक्वल टू 2 to 20. स्टेप 2 मीन टू से कि यहाँ इंक्रीमेंट 2 से होगा. क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स लेने हैं. ओके, इन जनरल स्टेप वैल्यू 1 होता है इंक्रीमेंट के लिए, लेकिन यहाँ स्टेप 2 लिया गया है. तो आई इज इक्वल टू 2 to 20. स्टेप 2 सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. नेक्स्ट आई, देन प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इज इक्वल टू सम. तो इस तरह से यहाँ पे सम स्टार्टिंग में 0 होगा, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 ली जाएगी. स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, तो आई की वैल्यू 2 ली जाएगी स्टार्टिंग में, तो 0 प्लस 2 यानी 2. फिर वो आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा कितने से? 2 से. तो फिर वो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा. तो सम की वैल्यू में फिर वहाँ पे 2 प्लस 4 यानी 6 हो जाएगा. इस तरह से वो कंटिन्यू प्रोसेस करेगा फॉर नेक्स्ट लूप के थ्रू, और वो रिजल्ट जो आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा वो 110 यानी 110 इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 20. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल पे आते हैं. टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ अ नंबर इंटर्ड बाय द यूज़र. कहा जा रहा है कि इस तरह का प्रोग्राम कीजिए जिसमें आप किसी भी नंबर को इंटर करें तो उसका टेबल आपको दिखाई दे आउटपुट स्क्रीन पे. एज यू कैन सी, प्रिंट इंटर ए नंबर, इनपुट ए फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10. प्रिंट ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू आई. नेक्स्ट आई. तो यहाँ पे इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो आई की वैल्यू हो रही है 1 से 10 तक, और इनपुट जो करवाना है वो ए की वैल्यू करवाना है. जैसे कि जैसे ही आप इसे रन करवाइएगा आपसे पूछा जाएगा इंटर ए नंबर.
When you click 8, the table of 8 appear in the output screen. If you enter 9, the table of 9 appear in your output screen. Okay, I think you all understand for next loop. Next one is activity zone. एक्टिविटी जोन खुद से ट्राई कीजिए एक बार. नेक्स्ट वन टॉपिक इज यूजिंग डू लूप फॉर लूपिंग. लूपिंग के लिए डू लूप का यूज करना. डू लूप इज सिमिलर टाइप ऑफ फॉर लूप स्टेटमेंट और फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट. डू लूप स्टेटमेंट यूज where we not know about the number of time of looping. The execution of a statement may depend upon a condition. In this looping statement, the execution depend upon condition. There are two types of do loop: do while loop and do until loop. Do while is executed as long as the specific condition is true. कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक डू वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो स्टॉप कर जाएगा. जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वहाँ पे आपका डू वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा. एज यू कैन सी हियर इज एन एग्जाम्पल. a is equal to 1, do while a is less than 3, print a is equal to a plus 1 loop. When the value of a is 1, 1 is less than 3, true, the loop body is executed. Loop body execute करेगा. The value of a is increased by 2. Increased to 2 मीन टू से 1, ए की वैल्यू 1 थी पहले, फिर वो ए की वैल्यू को 1 इंक्रीज करेगा, यानी ए की वैल्यू 2 हो जाएगी. 2 इज लेस दैन 3. 2 is less than 3. Condition true. Loop body is executed. The value of a is increased to 3. यानी a की वैल्यू 2 से फिर 3 हो जाएगी. 3 is less than 3. Here the condition false. So the statement stop execution of program. As you can see, the output screen only display 1 and 2 as a output, because 3 is less than 3 is false condition and the execution stop here. Next one example is x is equal to 10, do while x is less than 10, print x loop. In this example, x is equal to 10, x is not less than 10, is not true, the body loop is not executed, and output, no any output appear in the output screen, because 10 is never less than 10. I hope you understand. Some examples are here. To perform do while looping statement, to display odd numbers less than 30. Here, to display only odd numbers less than 30. First one line, CLS x is equal to 1, do while x less than equal to 30, print x is equal to x plus 2, and loop. CLS स्क्रीन को क्लियर करने के लिए x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी. वो कंडीशन को चेक करेगा, x लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए. फिर वो प्रिंट करेगा x की वैल्यू को, देन x की वैल्यू को इंक्रीज करेगा 2 से, क्योंकि आपको ऑड नंबर लाना है. अगर x की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है तो आप नेक्स्ट जो ऑड नंबर लाइएगा आफ्टर एडिंग 2 इन x. So x is equal to x plus 2 is here, like 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, and so on. Okay,
तो यहाँ पे होगा क्या कि x की वैल्यू 1 होगी, वो कंडीशन चेक करेगा, प्रिंट करेगा 1 को। फिर x की वैल्यू इंक्रीज होगी 3, कंडीशन चेक करेगा 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 30, येस ट्रू है, फिर वो प्रिंट करेगा 3 को। फिर इंक्रीमेंट करेगा 3 + 2 5, यानी x की वैल्यू 5 होगी, फिर वो चेक करेगा 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू 30, यानी कंडीशन ट्रू है, फिर वो प्रिंट करेगा 5 को। इस तरह से वो 29 तक कंडीशन को ट्रू करेगा और वो प्रिंट करेगा। आफ्टर 29 23, after 29 when we add 2 in 29, 31, x is equal to 31, 31 never less than equal to 30, so the condition false here, the execution stop here and display 1 to 23 29 in the output screen. Next one example is to add numbers entered by the user as long as user want to. इसे आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे समझने का। यहाँ पे है क्या कि यूज़र के अकॉर्डिंग डेटा को पुट करवाना है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वहाँ पे वो स्टॉप कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज लूप अंटिल स्टॉप। The do until stop loop statement is similar to do while loop statement. The only difference between two loops is that the do until loop, the execution of loop continues as long as condition is false. In do until stop, do until loop, the execution of loop continuous, यानी लगातार कंटिन्यूअस एग्जीक्यूट करता रहेगा, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, जहाँ तक आपका लूपिंग स्टेटमेंट है वहाँ तक वो एग्जीक्यूशन करेगा। मीन टू से डू अनटिल यानी तब तक करेगा जब तक कि कंडीशन आपका ट्रू और फॉल्स होता रहे, या फिर तब तक करेगा जब तक कि आपका लूप स्टेटमेंट क्लोज ना हो जाए। एज यू कैन सी a इज इक्वल टू 1, डू अनटिल a इज ग्रेटर देन 3, तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि a की वैल्यू 3 से एबव ना हो जाए। जैसे ही 3 से एबव हो जाएगी वहाँ पे लूप ओवर मैसेज आएगा और वहाँ स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन। एज यू कैन सी 1 इज़ लेस दैन 3, तो वो प्रिंट करेगा चाहे वो फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, ये डजेंट मैटर है, प्रिंट करेगा a की वैल्यू को। फिर a की वैल्यू इंक्रीज होगी 2 होगा, 2 लेस दैन 3, यानी वो फॉल्स भी है फिर भी वो प्रिंट करेगा जैसा कि डू अनटिल स्टेटमेंट कहता है। फिर वो a की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी 2 से, फिर वो चेक करेगा 3 इज लेस ग्रेटर दैन 3, फॉल्स है, फिर भी वो प्रिंट करेगा वैल्यू को। एंड आफ्टर दैट व्हेन a इंक्रीज्ड बाय 1, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 इज ग्रेटर दैन 3, यहाँ पे आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यानी वहाँ पे वो स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन को। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, एज यू कैन सी इन द टेबल। द आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले ओनली 1 2 3, as you can see here is an example for do loop. Okay, here I is equal to 5, do print I is equal to 1 I plus 1, loop while I is less than 2. Here this is in this example only one output display in the output screen. When I is equal to 5, the 5 is less than 2, this is the false statement, so only 5 display in the output screen. Next one topic is executing a loop, exiting a loop. Exiting means to stop a loop in the mid or in the between looping execution. If you want to stop the loop statement in between the execution, you should apply exit for statement for next loop and exit do statement for do while or do until
statement. As you can see, here is an example. CLS for I is equal to 1 to 10. Print enter the side of the square input side. If side is less than 0, then exit 4. यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि अगर साइड की वैल्यू निगेटिव हुई तो वहाँ पे 4 नेक्स्ट लूप एग्जिट कर जाएगा, यानी स्टॉप कर जाएगा. एज वी नो दैट द साइड नेवर निगेटिव, सो यहाँ पे आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वहाँ पे वो स्टॉप कर देगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को. आगे बताया है प्रिंट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. नेक्स्ट आई प्रिंट द प्रोग्राम इंड. यहाँ पे वो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा. 10 टाइम्स आपसे पूछा जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर. As you can see in the output screen, first you enter 5, then the perimeter of a square will be 20. As you can see, when you enter side of a square 3, the perimeter of a square will be 12, as you can see here. And when you enter the side of a square is -2, the side never be negative, so the condition false here. In this situation, the for next loop execution stop and display the program end message in the output screen, as you can see here. Now your chapter has been completed here. You should read words to know and recap zone for clear concept of this chapter. I will send question and answer of this chapter in PDF form. Thanks for watching this video. Bye bye.